एटार क्वेश्चन आसपे पार्टिकल इन क्वांटम डॉट्स माने जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो पचार देख यार दुई प्रकार क्वेश्चन आसपे तुम सिलेबस अनुसार क्वांटम डॉट एज एन एग्जांपल देती दैट मीन से केवल शॉर्ट नोट पचारि पारे किंतु आम तार मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी देखी है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जब पचार से पचार डिराइव एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी लेवल्स फॉर पार्टिकल इन क्वांटम डॉट क्वांटम बॉक्स है सेटा पढ़ले ये लिखिए देख नेग्लेक्टिंग द पीरियोडिक पोटेंशियल neglecting the periodic potential संस्थान देला ना आज कौन हमरा से पड़ी हां टिफिन ओटा चले छी neglecting the periodic potential existing in solids periodic potential existing in solids we can imagine zero dimensional solids ब्रैकेट है 0d लिख दो तो ब्रैकेट है 0d ओडी 0d ओडी के दे लिखो 0d solids in which electron is confined in a 3D potential box with extremely small length full stop less than 100 nm nanometer less than 100 nanometer breadth and height less than 100 nanometer breadth and height as a 0D solid ब्रेड स्पेलिंग होती BREADTH माने ब्रेड और हाइट का लेस देन कौन है 100 नैनोमीटर रो लेस है एज ए 0D सॉलिड बा 0 डायमेंशनल सॉलिड ए डायग्राम टा करो डायग्राम रे देखो এটা x एक्सिस এটা y এটা z এটা b এটা a দেবো এটা c কথা কোন কথা আমি লিখো लिखिल कि नहीं डायग्राम टा करो लिखुन डायग्राम लेगा thus the particle has no degrees of freedom thus the particle has no degrees of freedom thus the particle has no degrees of freedom in its momentum no degrees of freedom in its
momentum bracket में लिखो motion and it is localized in all the three directions so in quantum dot what happens देखो quantum dot रे कौन हुए ना it is localized in all the three directions देखो आम काली पढ़ते जीरो डायमेंशनल कौन हुए जीरो डायमेंशनल कौन हुए कह जीरो टी क्वांटम ये थ्री कन्स्टेंट आर इम्पोज सो थ्री कन्स्टेंट माने मु तीन टा डायरेक्शन रो कन्स्टेंट दे दीची तेणु से मूवमेंट करि परिबो नाही तेणु तार डिग्रीज ऑफ फ्रीडम केते जीरो नो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्वांटम डॉट रो सो क्वांटम डॉट रो डिग्री ऑफ फ्रीडम नाही ताले तार मोमेंटम रहइबो माने से मोशन करि परिबो so discrete energy states are associated discrete energy states are associated with all the three directions so ए केस रे कोन हबो ना क्वांटम डॉट रे डिस्क्रीट एनर्जी तीनटा डायरेक्शन में देखा जिवो हला डिस्क्रीट माने जेटा कंटीन्यूअस में काहे ये मोशन कोन यार कांस्टेंट अछि तीनटा डायरेक्शन में कांस्टेंट अछि नो मोशन नो डिग्री ऑफ फ्रीडम नो मोमेंटम हला सो ए केस रे कोन हबो ना यार तीनटा डायरेक्शन में डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स देखो बुझे बोलो सब हमें लिखिबा लेट द पोटेंशियल बी जीरो let the potential be zero inside the quantum box let the potential be zero inside the quantum box but infinite elsewhere elsewhere that is so potential मन रखिबो ए केस रे पोटेंशियल इनसाइड बॉक्स रो जीरो आसीबो हला किंतु ताको छाडी कि आउटसाइड रे कोन हबो इनफाइनाइट आसीबो इनफाइनाइट elsewhere that is u x y z that is u x y z let the potential be zero inside the quantum box but infinite elsewhere that is u x y z equal to 0 for 0 represent x greater than a 0 y b 0 so a case रे कोन ना in quantum dot हला potential is zero inside the quantum dot outside रो कोन हबो ना potential box outside रो सेटा कोन हिजबो infinity तो जेतरा हमें सॉल्यूशन करबा एनर्जी सॉल्यूशन कोन करबा स्क्रोडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन देखिबा हला सब लिखो the three dimensional time independent Schrodinger equation the three dimensional time independent Schrodinger equation the three dimensional time independent Schrodinger equation within the box
within the box that is a equal to 0 ହେଲା within the box equal to 0 bracket ରେ ଲେଖିବ each इक्वेशन रे कोन कहलो मन अछि कि नहीं नहीं del square by del x square plus del square by del y square plus del square by del z square psi x y z equal to 2mp by x square psi x y z मतलब सर ये टर्म ना कोने चलेगा आप टर्म रखते हैं q डॉट 0 तो नीचे अच्छा टर्म को omit कर ले So 3-dimensional time independent Schrodinger equation कौन आसला ना del square by del x square plus del square by del y square plus del अति साइड से 2me ये कौन वैल्यू तापरे होबो कौन तार नेक्स्ट स्टेप की करो नेक्स्ट स्टेप कौन होबो देखो ए केस रे मन रखिबो क्वांटम डॉट एक्सेप्शनल केस गुटे केस कोन ना एटी वेव फंक्शन ता हमें यार इनसाइड रे 0 किंतु आउटसाइड रे डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स अछि तेना हम लिखता है डी वेव फंक्शन psi x y z डी वेव फंक्शन psi x y z डी वेव फंक्शन psi x y z may be written as the wave function psi x y z may be written as a product so एटी हमें तीनटा डायमेंशन 3 डायमेंशन नो वेव प्रोडक्ट को कौन लिखिबा ना ताको मल्टीप्लाई करके लिखिबा psi x y z इक्वल टू psi 1 x psi 2 x psi 3 y सब तीनटा वेव फंक्शन पूरे x डायरेक्शन में y डायरेक्शन में z डायरेक्शन या तो psi x y z का हम कहले तीनटा रो मल्टीप्लाई आकारे लिखिबो मे बी रिटन एज ए प्रोडक्ट लिखलो द वेव फंक्शन psi x y z may be written as a product psi x y z equal to psi 1 x psi 2 y psi 3 z and energy E equal to capital E लिखिबो then energy E equal to लिखिबो E1 plus E2 plus E3 so energy भी तीनटा रो प्लस इजबो energy E equal to E1 plus E2 plus E3 where E1 1 टाको सबरे सब्स्टिट्यूट आकार लिखथुवा हला where E1 E2 and E3 where E1 E2 E3 are particle energy along x y z direction respectively along x y z direction respectively so e1 e2 e3 टा कोन ना x डायरेक्शन ना उडे और y डायरेक्शन ना उडे z डायरेक्शन सो यार एबे जो हमें वेव इक्वेशन लिखथिले psi तार तीनटा पार्ट हे जिवो तो देखो यूजिंग psi एंड e वैल्यू using psi and e value with variable separation we can write it variable separation we can write d square sin 1 x by plus 2mp
by h square square equal to 0 equals to psi 1 double dash x double dash মানে double dash plus x square psi 1 x so एटी केवल तुमको तकलीफ हो करे होला ये जो 1 2 3 yes हो जेतले एटी 1 मेंशन हो तो एटी 1 लो और 8 रे 1 लो एटा टिके लिखिया में कष्ट नॉलेज से सेम मेथड d square sin 2x and y होगा by dy square plus 2m देखिए ना 2a into sin 2y divided sin 2y equal to 0 plus that मैंने देखो dx के ना y के साथ dx sin 2y equal to cos ये y माने उठते हैं k उठते हां अरे खाली k दिले एटी kx ky kz आगो डे क्वेश्चन कौन कहला d square sin 3 z by dx square plus 2 again d 3 sin 3 z by x square equal to 0 plus that sin 3 double dash z plus a square डायग्राम समझते करथिला ना तो एडी तीनटा psi 1 x मन रखिया पई कोन हो एडी psi 1 x psi 2y psi 3 z आ गोटे मन रखियो इक्वेशन गुला देखो प्रीवियस इक्वेशन गुला कोन थिबो ना में डेल स्क्वायर नै होतले बदे सेठी ग्रेड नै होतले बदे सेठी हां कोन नथले देखो ये तीनटा डिफरेंट पार्ट अच्छे डेल स्क्वायर डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाय डी वाई स्क्वायर डी स्क्वायर बाय डी जेड स्क्वायर किंतु आगुड़ा देखिबो अलग थिबो अलग मेथड थिबो तीनटा पार्ट एमसी नथिबो हला सेटे बाउंड्री कंडीशन यूज करथले एटी किंतु यूज करबा psi 1 psi 2 psi 3 लेक्स सालो समझते देखो where kx square equal to where kx square equal to where तीनटा पार्ट होगा where kx square और kx square और ky square कौन मतलब kx square equal to 2m e1 by h square 2m e2 by h square एटी बॉडी रे साइड रे 1 लिखियो एना लिखियो 1 सब्स्टिट्यूट 2m e3 by सामे एटी डिफाइन करले केस एटा kx रो स्क्वायर ky रो स्क्वायर k z रो स्क्वायर
एटी डिफाइन कर सारे इक्वेशन डिफाइन कर सारे इक्वेशन सॉल्व करिया पे कोन करियो बाउंड्री कंडीशन कौन बाउंड्री कंडीशन लेख as the wave function vanish at boundary as the wave function vanish at boundary vanish माने vanish हिजवा तो ये क्वेश्चन बता दे अगर vanish कर दे माने वेव गले बाउंड्री एटा बाउंड्री से वेवटा मिले गला मिसी जीवा हला vanish करवा मिसी जीवा मिले जीवा हला वेव फंक्शन एग्जिस्ट करबनी सेठी हला डज नॉट एग्जिस्ट दैट एटा सेई पई लिखा हला vanish देखो as the wave function vanish at boundary so boundary condition like 0 पे how to get and x equal to a side to x star side to y side to y का 0 कितना हुआ and y equal to 0 and y equal to b y equal to b तो y3 sorry side 3 second to the above side 3 z equal to 0 and z equal to 0 and z equal to c एटा भी तीनटा बाउंड्री कंडीशन है यार तने बाउंड्री कंडीशन बुझवालो देखो बाउंड्री होची स्टार्टिंग होची 0 रु a गुटे और 0 रु b और 0 रु c हला x डायरेक्शन 0 रु a आसी y डायरेक्शन 0 रु b और z डायरेक्शन 0 रु c सो नॉर्मलाइज सॉल्यूशन देखो सो नॉर्मलाइज सॉल्यूशन so normalized solution of f of equation are make so normalized solution of f of equation are the equation solution का कौन आसलो देखो sin 1x और होचे sin 2 y और होचे sin 3 कौन आसलो यार देखो √2 by a यार से √2 by b यार से √2 by c अब सब तो sin फंक्शन आसलो sin nx by x by k eta rasiko n y by y by b eta rasiko nz by z by हला सो इरो एटा आसो psi 1 एक्स्ट्रा आसो केते root over of 2 root 2 by root a sin nx by x by a एटा एटा सीरियल एमते मन रखिया पय चेष्टा करियो हला हला टाइम है ना हां तो टाइम है बाजू को get the time and let है 6 particle 6 a is equal to nx by a y equal to ny by b
है सिंस kx इक्वल टू nx पाई बाय a ny पाई बाय b है सो कंप्लीट आइजेन फंक्शन कैसे लेखो कोई भी एक्चुअली के इक्वल टू सो सुना कैसे इक्वल टू nj पाई बाय c so complete eigen function for a quantum dot so complete eigen function of a quantum dot टा सबले मन रखियो गोटे नानो पार्टिकल क्वांटम डॉट टा कोन सबले eigen function for a quantum dot ब्रैकेट रे लिखो नानो particle is psi of xyz equal to 8 by the power of abc sin nx by x get a sin sil sin nx by x by a another sin ny pi y by b এটা ফুল লেখা ছিল sin nj pi j by c अरे n2 লেখা আছে এই যে n z দ্বারা 2 লেখা আছে করেকশন করব জেন লেভেল দেখলা এটা হচ্ছে কমপ্লিট আইজেন ফাংশন অফ কোয়ান্টাম और देखला देखो nx equal to 1 2 3 ny equal to 1 2 3 দেখা আছে z equal to 1 2 now like nx and y is integrate अब टिके होছে ये बात चल रही है देखो and eigen energy of three direction and eigen energy for three directions and eigen energy for three directions तीनटा डायरेक्शन आइजन एनर्जी वैल्यू केते देखिबा सो E1 इक्वल टू देखो E1 इक्वल टू x स्क्वायर बाय x स्क्वायर बाय 2m का कोनी E2 इक्वल टू सर ऑर्डर ऑफ द देखो इक्वल ऑफ देखो x स्क्वायर by x स्क्वायर by 2m होला E2 equal to x स्क्वायर by y स्क्वायर by 2m होला E3 equal to x स्क्वायर by z स्क्वायर by समान देखा नहीं बने सबरे x y चश्मा बोलो है सोला देखो kx रो वैल्यू पुट करियो kx रो वैल्यू कोन से करलो एटा y स्क्वायर कथा बोले लिखि दियो कथा कहबो nx स्क्वायर बाय 2m स्क्वायर आइलैंड रो y स्क्वायर अब इक्वल से आप शब्द ny ला by 2m d square এটা হলো pi square x square plus square nj by 2m हां এটা হলো k এর মধ্যে পুট থাকে k এর মধ্যে ns বাই हां কোন আছে k এর মধ্যে কত ns বাই ও মাই গড এটা kx এর মধ্যে सर मेरी नहीं
ହେଲା ଏବେ ଦେଖ e ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଥିଲା e1 e2 e3 ଥିଲା ହେଲା so ଦେଖ the net eigen energy corresponding to eigen function देखो the net eigen energy corresponding to eigen function is the net eigen energy corresponding to eigen function is corresponding to eigen function is कौन देला e equal to कौन थिला v1 plus एटा थिला कि नहीं एटा थिला कि नहीं कोन बस एबे दीटा को सब को प्लस कर दबो ई जो वैल्यू रे प्लस कर दे कोन आछो ना pi स्क्वायर h स्क्वायर by 2 एबे कॉमन जीवो कॉमन करले रहइबो केते ना nx by a रो स्क्वायर plus ny by b रो स्क्वायर plus nz by c रो स्क्वायर अब इधर हबो कि नहीं रे लिखिल कि नहीं कौन लिखिल एते बेल बाजिला तुम दलाले सब जे थिला हला केते मन कहउतलो बाजिलानी देखो हां बेल बाजो देखो द टोटल एनर्जी ऑफ ए क्वांटम डॉट ई द टोटल एनर्जी ऑफ ए क्वांटम डॉट ई is discrete depending of UP Uttar Pradesh depending on n3 quantum numbers तू किछि लेखन कहीं रे n नहीं आ का पाखरे डबल पेन नहीं वेरी गुड काली मु किंतु देखिबे तोर देखिबे एटा लेखिके आसी depending of n3 quantum numbers nx ny and nz ny सब सबस्क्रिप्ट दबा nz फुल स्टॉप hence total energy of quantum dot are quantized hence total energy of quantum dot are quantized now the sentence when two or more of the dimensions when two or more of the dimensions when two or more of the dimensions are same bracket a equal to b or a equal to b equal to c when two or more of the dimensions are same bracket रे लिखिबो a equal to b or a equal to b equal to c then more than one eigenfunctions corresponds to same total energy such eigenfunctions possesses degenerate eigenvalues
full stop. The degeneracy arises. The degeneracy arises from the symmetry of the structure. From the symmetry of the structure. देखो ये बढ़िया कंडीशन देला ये जो इक्वेशन टा में पाइले कि ए इक्वेशन टा देखो ए इक्वेशन रे कोन करबे a इक्वल टू b देबे ताले ए डॉट में कोन मर्ज कर दे ए इक्वल a होला ताले मन कोन 2nx स्क्वायर बाय x स्क्वायर यदि वो तीनटा का टर्म सेम आसबो a इक्वल b इक्वल c ताले तीनटा देखो a आसियो ताले 3 इक्वल 3nx स्क्वायर बाय a भी सब सेम आसियो तेणु डीजेनेरेसी केतरे आसियो जदी स्ट्रक्चर टा सिमेट्री आसियो स्ट्रक्चर सिमेट्री मींस धर मोटे स्क्वायर में a इक्वल b आसियो a इक्वल b आसियो ताले से मर्ज करबो ए जो nx और my ର वैल्यू सेम आसियो nx my ର वैल्यू सेम आसियो ताले एनर्जी लेवल कोन हो मोर एटी देखो सिंपल जिंस एटी एटी केते पिला बसछ 10 जन बसछ 10 जन पिला रो डिफरेंट कोन अछि आईडिया अछि मैं पे कौन करबे ए दिन को सेम करबे माने ए दिन को सेम माने ताका आईडिया को सेम करबे ताले मोर कोन है एबे नॉट आईडिया यदि मैं तीन जन को सेम कर देबे एबे आठटा आईडिया चार जन को सेम कर देबे एबे मोर तो केते आईडिया আছে सातटा कि छटा आईडिया আছে बुझियो छी तेन मोर एनर्जी लेवल को एबे मर्ज कर देबो यदि मैं ए बी सी वैल्यू सेम नहीं ताले एनर्जी लेवल भी मर्ज कर दिबो जेटा कि हम कोन कहउचे ना डीजेनेरेसी कहउचे ताको कोन कहबा डीजेनेरेसी मींस कमी आसी बुझे ना डीजेनेरेसी रो आ गोटे भलो एग्जांपल होची जेनेरेसी माने तुमरो इंप्रूवमेंट डीजेनेरेसी होची तुमरो डिक्रीज हला तो एनर्जी लेवल कम आसियो केतले ना हेतले सिमेट्री स्ट्रक्चर आसियो हला तेनु जदि क्वांटम डॉट जति तुम केतले रिसर्च करबो क्वांटम डॉट रो जदि डायमेंशन गुडा सेम रखि देबो तार जो प्रॉपर्टी आसीबो क्वांटम डॉट रो जदि डायमेंशन डिफरेंट रखियो ताले तार प्रॉपर्टी अलग आसीबो धरो क्वांटम डॉट रो मो एबीसी वैल्यू सेम रख देली ताले तार अलग प्रॉपर्टी एबीसी वैल्यू जदि डिफरेंट रखिबी ताले तार अलग प्रॉपर्टी आसीबो